गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण। कैम छो, कैसे हो आप लोग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज हम लोग आ चुके हैं सूरत के प्राणी संग्रहालय में यानी सरथाना। यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्राणी संग्रहालय है यानी ज़ू, और यहाँ का आज मैं आपको पूरा टूर देने वाला हूँ। और यहाँ पे कितनी टिकट है, एंट्रेंस टिकट कितनी है। यहाँ पे एंट्री के लिए 30 रुपीज़ है पर पर्सन की एंट्रेंस टिकट। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही मस्त है। यहाँ पे लायन है, टाइगर है, कई सारे एनिमल्स है। हम आगे जाएंगे, आपको पूरा आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करता है। तो सबसे पहले एंट्री हम शुरुआत से करते हैं। शुरुआत से मैं आपको पूरा एंट्रेंस दिखा। तो यहाँ पे कुछ रिनोवेशन हुआ है जिसके बाजू में ही आप देख पाओगे तो पूरा है। तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी हमने देखा तो बंद था वहाँ पे। तो वो अगर ओपन हो जाएगा तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अंदर से पूरा ज़ू दिखाता हूँ, क्योंकि अभी वैकेशन आने वाला है, समर वैकेशन। तो अब सब लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हाँ, न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पेसिस में एनिमल है, जिसमें से अभी हमने आपको टाइगर देखा है। टाइगर में भी यहाँ पे वाइट टाइगर और नॉर्मल टाइगर है। उसके बाद यहाँ पे बाजू में लायन है, तो मैं आपको लायन दिखाता हूँ। फाइनल लायन बहुत ही बड़े, यहाँ पे दोनों लायन बाहर ही है, तो वो मैं पूरा आपको वीडियो दिखा। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पेसिस में बर्ड है, एनिमल है। आगे बर्ड्स है, अभी और भी आइए। बहुत ही बड़ा ज़ू है, यानी आपको यहाँ पे थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही मस्त है। देखो टाइगर एकदम हमारे सामने, एकदम पास से दिखाता हूँ। So high I'm hypnotized. What's up
is down, what's left is right. Chasing stars and ये एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि उसका नेम क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके बाद उसका वेट और उसके बाद वो कितनी ईयर्स तक रह पाता है और वो कहाँ की स्पीशीज़ है, जैसे कि आप इस पर पूरा देख पाओगे। holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज में बर्ड है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और जिसमें पिकॉक, वाइट पिकॉक और बहुत सारे पैरोट और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं। पहले एनिमल्स थे, उसके बाद क्रोकोडाइल और वो सब थे, फिर यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है एनिमल्स के साथ अब बर्ड्स। तो बर्ड्स में बहुत सारे, तो मैं आपको बर्ड्स दिखा रहा हूँ। Times don't
to hide. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring. तो ये था सरथाना ज़ू जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे फुल्ली ग्रीनरी आप देखोगे तो सभी और ग्रीनरी है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पेसेस में। सबसे पहले यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपीज़ है एडल्ट के लिए और बच्चों के हिसाब से सभी के लिए अलग अलग टिकट्स है। उसके बाद अगर आप एंटर सबसे पहले जो एनिमल्स है वो आएंगे जिसमें लायन, टाइगर, लीपर्ड, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। उसके बाद बर्ड्स है और यहाँ पे लास्ट में बटरफ्लाई जोन है लेकिन वो अभी बंद है। और यहाँ पे बहुत सारे बाद लास्ट में और स्टार्टिंग में जब एंटर हो गए वहाँ पे एक फूड कोर्ट है। पूरे में आपको फूड नहीं मिलेगा, एक लास्ट में आपको वहाँ पे फूड मिलेगा। बीच में भी एक जगह स्टार्ट हुआ है जो भी न्यू हुआ है लेकिन वहाँ का हमें इतना रिव्यू नहीं बता, बट जो एंड में है वो बहुत ही बेस्ट है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएगी। और उसके साथ में अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ ना तो बहुत ही पीसफुल है और ऐसा लगता है कि आपको जो पूरा जो बच्चों के लिए ना ये बहुत ही बेस्ट है। जो एंट्री टिकट है वो भी 30 रुपीज़ अच्छी है बच्चों के लिए। यहाँ पे उनको लायन, टाइगर सब इस फीस में आ जाएगा तो वो भी टिकट ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए देखो तो छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय, ज़्यादातर फैमिली के साथ ही आते हैं और वो लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ का व्लॉग लिया था, इस बार अभी हमने सोचा कि समर आ रही है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, अपडेट दे। और यहाँ पे बाहर बहुत सारी नया अब जो रिनोवेशन है वो काम स्टार्ट है। जो रिनोवेशन हो जाएगा उसके बाद तो बहुत ही बेस्ट लगेगा। जो रिनोवेशन है वो अंदर की साइड, मैंने अभी सुना था कहीं पे रिनोवेशन के बारे में, बट वो अंदर की साइड नहीं है, वो बाहर की साइड। गेट सब एंट्रेंस करोगे तो सामने की साइड सब रिनोवेशन हुआ है जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए लगाया गया। वो हमारा जो यहाँ का प्लेन है फाइटर जेट वो भी बाहर है। ऐसे सभी बाहर की साइड रिनोवेशन है, अंदर की साइड नहीं है। अंदर जो नॉर्मल पहले था वैसा ही, अंदर कुछ इतना अपडेट नहीं किया गया। जो भी अपडेट है वो बाहर की साइड है, वो पूरा एंट्रेंस है। वो जो भी मे भी आगे जाके कुछ अपडेट होता है तो वहाँ से एंट्री या कुछ, बट वो अभी हमारे पास डिटेल्स नहीं है। तो उसके साथ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द एक नए व्लॉग में फिर से मिलता है, तब तक बाय बाय, अलविदा।